ओके, सबने ज्वाइन कर लिया? तो जरा कैमरा ऑन कर लो, सारे कैमरा ऑन। सो लेट मी स्टार्ट। मैंने कहा था एफाइन मैप जो है, जरा ऑन करो ये सारा कैमरा ऑन। कैमरा ऑन। तो लेट मी स्टार्ट शेयरिंग द स्क्रीन। ओके, तो मैंने कहा था एफाइन इज ऑलमोस्ट लीनियर, क्योंकि एफाइन की प्रॉब्लम क्या है? अभी जो मैंने किया था रियल नंबर्स में टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। एक्चुअली लीनियर मैप में क्या होता है, टी ऑफ इट हैज टू सेंड ओरिजिन टू द ओरिजिन। वो लीनियर मैप की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एंड दिस ऑफ कोर्स डज नॉट सेंड 0 to 0. So if we somehow, so if अगर एफाइन मैप ऐसा हो जिसमें t of 0 0 हो, that's what we are going to prove, then it is indeed linear. So एक छोटा सा थ्योरम है, एक एक्सरसाइज हम कर सकते हैं, that t is affine if and only if t minus t of 0 is linear. Of course, T is a map from between vector spaces, that's understood. And of course, यहाँ पे मैं कह दूँगा real vector spaces. Okay. So, चलो मैं लिख देता हूँ where T is a map from X to Y, where X and Y are real vector spaces, real linear spaces. अब proof भी इसका थोड़ा मतलब है easy, लेकिन I should leave it to you. So let me write T dash is equal to T minus T of 0. तो मुझे दिखाना है. So suppose it is affine. Suppose P, let me write as, suppose T dash is linear. तो मुझे दिखाना है then T is affine, है ना? So we have to show T is affine. Now T is equal to T dash plus T of 0, right? And hence, and I'm assuming that T dash जो है वो linear है. Hence, for all 0 less than alpha less than 1, I would have T of alpha x plus 1 minus alpha times y plus T dash is equal to T dash of alpha x plus 1 minus alpha times y plus T of 0. Now T dash जो है वो linear में assume कर रहा हूँ, है ना? This is linear. तो linear का मतलब I can write it as alpha into T dash at x plus 1 minus alpha into T dash of y. By my assumption T is linear. Sorry, T dash is linear. So plus अगर मैं ऐसे लिखूं alpha times T of 0 plus 1 minus alpha times T of 0, because it is just a number, I am adding and subtracting the same number. Now this can be written as alpha into T dash of x minus T of 0 plus 1 minus alpha into T dash of x plus T dash of 0, T of 0, which by my definition should be alpha T of x plus 1 minus alpha times T, sorry यहाँ y होना चाहिए, y होना चाहिए. So this T of y कहाँ है मेरा? So actually ये भी affine है ना? So this is true for all alpha.
Now taking y equal to 0, because for all x, y belonging to x, ठीक है? Okay. Now taking y equal to 0, तो अगर मैं y को 0 क्योंकि सभी x y के लिए है, चलो दूसरे पेज में लिखता हूँ मैं. So taking y equal to 0, I should get t of alpha x is equal to alpha times tx for all 0 less than alpha less than 1. So which implies, now since t of 0 is equal to 0, because what do I have? I've got, मुझे क्या दिखाना है? Sorry, मैं t dash की बात कर रहा हूँ. क्या हो रहा है? हाँ, t की बात कर रहा हूँ. t of 0 जो है, just a minute. ओ मैंने कहीं पे कुछ गड़बड़ कर, मैंने माना t dash is linear, fine. I have to show that t is affine. तो ये तो यहीं पे हो गया ना. So that is actually मैं reverse के बारे में सोच रहा हूँ. Okay, t of alpha x. Now this is true. So therefore t is affine. मुझे actually इसका converse दिखाना है. तो पहला तो हो गया. तो अगर now conversely suppose that t is affine. मैं सोच रहा था इसको हो क्या गया. Conversely suppose that t is affine. I have to show that t dash is, we have to show that t dash is linear. तो मैं t को affine मानता हूँ और मुझे दिखाना है t dash is linear. Now t dash जो है, I've got t dash of x is equal to t of x minus t of 0. That's the definition for all x belonging to x. Now it implies that t dash at 0 is actually equal to 0. Further, for all 0 less than alpha less than 1, t dash of alpha x plus 1 minus alpha times y would be equal to t of alpha x plus 1 minus alpha times y, okay, minus t, oh sorry, मैंने क्या लिखा है, फॉर्मूला पे स्टिक करना चाहिए. अल्फा x plus 1 minus alpha times y minus t of 0. Then you can write it as alpha times t of x, because I'm assuming that t is affine, है ना, और मैं alpha को ले रहा हूँ between 0 and 1, should be equal to 1 minus alpha times y, t of y minus t of 0, again doing the same trick, क्योंकि subtract adding, so it would be alpha times t of x minus t of 0 plus 1 minus alpha times t of y minus t of 0. You can easily check. मैंने वही किया, यहाँ add and subtract same चीज हो गई. So that is equal to alpha t dash of x plus 1 minus alpha times t dash of y. तो वही मैं सोच रहा हूँ, मैंने इससे पहले क्या लिखा. हाँ ठीक है, यहाँ t है, थोड़ा सा प्लस माइनस है ना, खाली फर्क. ओके, so this is true for all 0 less than, this is true for all x y belonging to x. तो यहाँ पे यूज हमने किया, लीनियर नहीं किया, यहाँ हमने यूज किया t is affine. ओके, चलो अब दिखाते हैं t dash is linear. Now taking y equal to 0, we get t of alpha x, t of t dash, ये ना इसमें
t dash of alpha x is equal to alpha t dash of x for all 0 less than alpha less than 1. And since t dash at 0 is equal to 0, therefore I can write t dash of alpha x is equal to alpha times t dash of x for all 0 less than equal to alpha less than equal to 1, क्योंकि 1 पे तो obvious है. Now suppose alpha is bigger than 1. Alpha is bigger than 1. It implies that 1 by alpha जो है वो less than 1 होगा. और 1 by less than के लिए हम ये prove कर चुके हैं. Let's call it 1. Okay, so t of x can be written as t dash. T dash, it would be t dash of alpha. Or should I write it like this? 1 by alpha into alpha of t of x. Okay, I can write it as 1 by alpha into alpha of x. और चूंकि 1 by alpha less than 1 है, by 1 it would be 1 by alpha into t dash of alpha x by 1, which would imply that t dash of alpha x is equal to alpha times t dash of x for alpha greater than 1. Hence, combining it with 1, I get t dash of alpha x is equal to alpha times t of x. मुझे दिखाना है t dash is linear for all alpha greater than equal to 0. अब negatives को लेते हैं. Now अभी तक हमने positives को देखा, तो it would imply that t of 2x is equal to twice t of x, है ना? For all x belonging to x, which can be written as t of x plus t of x. That's what we mean by twice. Okay, so it implies that t of x plus x is equal to t of x plus t of x for all x belonging to x, which implies that t of 0, oh sorry, हमारा ये t prime है इसका नाम, ये ना confusion इस पहले भी हुआ था. T prime. So t prime of 0 can be written as t prime of x plus minus x. That is the same thing as t prime of x plus t prime of minus x. But t prime at 0 is equal to 0. It means 0 is equal to t prime of x plus t prime of minus x, which implies that t prime of minus x is equal to minus t prime of x. Once we do that, the negative numbers bhi aayega. So if beta is a negative real number, then I can write beta is equal to minus alpha, while alpha is a positive number. So which implies that t dash of beta x is equal to t dash of minus alpha of x. But that would be minus t of alpha of x because of, let's call it second, by second, which would be t dash alpha of SA, because alpha is positive और positive हम बाहर निकाल सकते हैं, और minus alpha क्योंकि beta है, तो hence हमने दिखा दिया t prime of alpha x is equal to alpha times t prime of x for all alpha belonging to R. तो स्केलर तो बाहर आ जाते हैं. Now the question is वो sum का. Now t dash of वो easy है rather, x plus y because ये linear है is equal to, I can write it as t dash of twice x by 2 plus y by 2. ठीक है ना? अब चूंकि नंबर को हम बाहर निकाल सकते हैं, this can be written as twice t dash of x by 2 plus y by 2. लेकिन अगर मैं देखो हम प्रूव कर चुके हैं, हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं t dash of alpha x plus 1 minus alpha times y, ये पहला ही स्टेप था.
is equal to alpha times t dash of x plus 1 minus alpha times t dash of y. हम पहले ही स्टेप में प्रूव कर चुके थे. For all 0 less than alpha less than 1, you take alpha equal to 1 by 2, जो कि ले सकते हैं इसमें. So this would be twice 1 by 2 into t dash of x plus 1 by 2 into t dash of y, which is equal to, इतना लंबा छोड़ा. Okay, for all xy belonging to x, which implies that t dash is linear finally. ठीक है? तो you मतलब we have done this in the first step. जब हम कर रहे थे ना स्केलर्स, फिर हमने y लिया था 0 वगैरह वगैरह. Okay. Okay, so we are done. ये तो हो गया एक. दूसरा मैं होम असाइनमेंट देता था सब बच्चों को, लेकिन वो अच्छी एक्सरसाइज है तो वो भी करते हैं. एक और एक्सरसाइज. So if T is a mapping from x to y, where x and y are real normal spaces. Normal spaces जरूरी नहीं है, it could be even topological vector spaces. मतलब there is a notion of continuity there. That's what I am trying to say. Should I write? चलो real normal spaces में लिखता हूँ. But मैं यहाँ बताना चाहूँगा it could be just anything जो vector space है और साथ में उसमें कोई topology which is compatible with the vector space operations. So anyway, normal spaces को bracket में रखा. It could be also topological vector spaces, but that's not important क्योंकि हम normal spaces में ही करेंगे. तो then if T is continuous, अगर T continuous है and it sends midpoints to midpoints, यानी T and T of x plus y by 2 is equal to 1 by 2 of T of x plus T of y for all xy belonging to x, then T is an affine map. T is an affine map. अगर T कंटिन्यूअस है और ये मिड पॉइंट्स को मिड पॉइंट्स पे भेजता है, तो ये दो पॉइंट्स के दरमियान जो लाइन सेगमेंट है वो लाइन सेगमेंट पे ही मैप करेगा. तो अल्लो लाइन सेगमेंट कहना सही नहीं है, वो तो R2 या R3 में ही ट्रू है, लेकिन हम इंट्यूटिवली अगर हम इसको पिक्चराइज करना चाहें, सोचना चाहें, तो वैसे सोच सकते हैं. प्रूफ पीस का थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन है बेसिकली. सो अब मुझे पता है T of x plus y by 2 is equal to 1 by 2 of T of x plus 1 by 2 of T of y. ठीक है ना? So I can write, how about this T, then it implies that T of 1 by 2 of x plus y by 2 plus y, अगर मैं इस पे अप्लाई करूं तो ये मेरा x है और ये मेरा y है. So this would be equal to 1 by 2 by the same formula. 1 by 2 क्योंकि for all x है तो x plus y by 2 भी हो सकता है. So it would be 1 by 2 into T of x plus y by 2 plus 1 by 2 of T of y. Now by that, by using again the same principle, this would be 1 by 2 of T of x plus 1 by 2 of T of y. Okay, T of y plus ऐसे plus 1 by 2 of T of y. And you will see that this would be 1 by 2 square of T of y. चलो मैं पहले लिख देता हूँ. It would be 1 by 4 of T of y plus 1 by 4 of T of y plus 1 by 2. So that would be plus 3/4 T of y. Now मैंने y लिखा, ये 4 है यहाँ पे. इसको मैं लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ? I can write it as 1 by 2 square T of y
minus 1 minus 1 by 2 square plus t of y. So I can write here t of, अगर मैं यहाँ पे इसको लिखूं t of, again यहाँ अगर मैं वैसा ही करूँ मल्टीप्लाई करूँ अंदर, तो ये बन जाएगा again 1 by 4 of sorry यहाँ x 1 by 4 of x plus 3 by 4 of y is equal to this thing. That means I am saying that t of 1 by 2 square of x plus 1 minus 1 by 2 square of y is actually equal to 1 by 2 square of t of x plus 1 minus 1 by 2 square of t of y. I think you see where we are going. तो थोड़ा सा ही करके by induction मैं ऐसे ही करता जाऊं, you can easily so by induction जो कि तुम थोड़ा खुद करोगे, I have t of 1 by 2 raised to power n of x plus 1 minus 1 by 2 raised to power n of y, यहाँ पर y is equal to 1 by 2 raised to power n t of x plus 1 minus 1 by 2 raised to power n of t of y. Now this is true for all n running from 1 to, मतलब for all natural numbers. We can go again and again and again. तुम इंडक्शन से आराम से इसको कर सकते हो. You have to, मतलब दिखाना क्या है हमें एक्चुअली दिखाना है t of alpha x plus 1 minus alpha times y. हमें दिखाना है t is affine is equal to alpha times t of x plus 1 minus alpha times t of y for all alpha lying between 0 and 1. और हम उसकी तरफ आ रहे हैं, हमने अभी लिया 1 by 2 raised power n के लिए. इसके बाद एक सेकंड इंडक्शन लगेगा. चलो मैं लिख देता हूँ. We claim that t of m by 2 raised to power nx plus 1 minus m by 2 raised to power ny is equal to m by 2 raised to power n t of x plus 1 minus m by 2 raised to power n t of y for all m belonging to natural numbers and m lying between 1 and 2 raised to power n minus 1. अब ये तुम प्रूव कर सकते हो by induction, right? यानी 1 के लिए तो obviously true है क्योंकि हम ये प्रूव कर चुके हैं. For 1, for m equal to 1 obvious, assume for m equal to k and prove for m equal to k plus 1. ये तुम करोगे. अब इसके बाद क्या हम करेंगे, अब जो ये नंबर्स हैं, if you take these numbers m by 2 raised to power n where n of course is a natural number and of course m जो है वो 2 raised to power n minus 1 से लेके 1 तक हो सकता है. तो this set is dense in 0 1. So let me write it as m to n. Now since the set यहाँ मैं लिख देता हूँ ये, but you just, the main idea मैंने दे दिया actually. जैसे मैं लिखता हूँ since the set, this set m by 2 raised to power n is a natural number and 1 is less than m is less than equal to 2 raised to power n minus 1 is dense in what, in 0 1. Therefore यहाँ पर हम continuity use करेंगे. We are given that t is continuous. Therefore by continuity of t, ये तुम पे छोड़ता हूँ, you would get t of alpha x 1 minus alpha times y is equal to alpha times t of x plus 1 minus alpha times t of y for all alpha lying between 0 and alpha belonging to this open interval 0 1
and for all x, y belong to x, which implies that t is affine. तो हाँ, तो इसके बारे में सोचना है, ऐसे सेट है, इसको बहुत जगह यूज करते हैं, that it stands in this. तो सपोज तुम लोगे n को 3, क्योंकि n कोई भी n अगर 3 है तो फिर क्या बनेगा, m होगा 1/2 क्यूब, है ना, 2 by ये जो सेट में आ जाएंगे फॉर n इक्वल टू 3, 2/2 क्यूब, 3/2 क्यूब, 4/2 क्यूब, 5/2 क्यूब, है ना, ये कहाँ तक जाएगा 7/2 क्यूब तक, 6/2 क्यूब, 7/2 क्यूब, ऐसे ही फैलता जाएगा ना, जितना हम n, चूंकि हम ले रहे हैं n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, इसका जाल जो है वो पूरा वो 0 1 को कवर कर देगा, ऑलमोस्ट यानी वहां डेंस हो, उसके एप्सिलॉन नेबरहुड में कोई भी एल हो। एनीवेज, तो ये डिटेल्स तुम वर्कआउट करोगे, ड्यूरिंग द कंटिन्यूटी ऑफ t वी कैन शो दैट t इज affine। तो ये एक और एक्सरसाइज हो गई। देन now let's turn to something else. We define something called a reflection. The reflection is defined, and you know, intuitively, what do we mean by reflection? So reflection through this line would be a point is sent here, this point is sent here, this point is sent this, and vice versa. तो रिफ्लेक्शन की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है वो आइडेम्पोर्टेंट तो नहीं कहते, आइडेम्पोर्टेंट नहीं बोलते हैं, इसको स्क्वायर आइडेंटिटी नहीं, I don't know, there is another word, but ये है कि अगर हम उसको 2 बार अप्लाई करें, we will get the space back on any space. तो रिफ्लेक्शन का जो स्क्वायर है वो हमेशा आइडेंटिटी होगा, if you compose the reflection, क्योंकि अंडर रिफ्लेक्शन this point goes here, तो अगर दूसरी बार लगाएंगे तो this point will go here, so we will be where we started, so it would be an identity. So, but in general, so we define on a vector space, now given z belonging to x, where x is a vector space, हम मतलब इसको सीधे डिफाइन करेंगे टू एंश्योर दैट जब हमें दूसरी बार लगाएं तो हम हमें आइडेंटिटी मिल जाए। तो a map, the reflection map of x in z, x in this z is defined to be the map psi from x to x by psi of x is equal to 2z minus x. क्यों? मतलब we want it to be identity, तो इसकी अगर हम प्रॉपर्टीज देखें तो पहली बात इसके बारे में ऑब्वियस है कि psi square is equal to identity. Why? Because psi square of x, by that we mean psi of x, that would be psi of 2z minus x. वो किसके बराबर होगा? Of course होगा 2z minus 2z minus x. That's the definition. So that's just x. So psi square is identity. Second, size of जो हम चाहेंगे, because it would preserve the distances. जितना यहाँ दूर reflection preserves the distances. So psi is an isometry. That's again obvious, because norm of psi x, इसको लिख लो normed linear space यहाँ पे, चूंकि हम norm में आ गए ना, normed, हाँ इसको define तो हम कर सकते हैं ना, मतलब इसका कुछ कनेक्शन नहीं है norm के साथ, है ना, तो लेकिन चूंकि हम चाहेंगे इसको, जब हम normed linear space, मतलब every normed linear space है vector space, तो अगर इस पे norm है या metric है तो normed linear space कर दो, because psi x, psi of y would be equal to, that's easy, norm of 2z minus x minus 2z minus y, which would be just norm of x minus y. So it preserves the distance between the points. Third,
Z is a fixed point. Z is the only fixed point of psi. Because of obviously psi of Z is actually equal to 2 of Z minus Z, that's equal to Z, वो तो है ही, but it is unique. For if psi of U is equal to U, it would imply that 2Z minus U is equal to U, which would obviously mean Z is equal to U. So it has a unique fixed point, that is जहां से हम reflect कर रहे हैं चीजें. Third, ये important हम इसको use करेंगे, that is the distance between psi x and z, जो कि हम चाहेंगे reflection में हो, is the same as reflection the distance between x minus z. यानी जहां से हम reflect कर रहे हैं, जितनी distance यहाँ हो उतनी distance यहाँ से हो. ये x है, ये psi of x है. मतलब and of course ये भी हम चाहेंगे, इसका एक psi of x minus x should be actually equal to twice norm of x minus z. अब ये तो तुम कर ही लोगे, है ना? मतलब ये तो ऑब्वियस है, क्यों? क्योंकि psi of x जो है वो क्या है, 2z minus z किसके बराबर हो, सॉरी मैंने क्या लिखा, तो psi of x is 2 of क्या था वो, 2z minus x minus z किसके बराबर होगा, that would be एक z खत्म हो गया, so it should be norm of z minus x या x minus z, वो सेम ही है. एंड ये भी ऑब्वियस है ना, because psi of x minus x क्या होगा, so it would be 2z minus x minus x, so that would be twice z minus x in norm, so that would be twice norm. मतलब obvious solutions है ना जो हम expect करते हैं इसमें. अब ये preparation थी what we call मजूर-उलाम theorem के लिए. तो let's see if we can do. तो अब मैं अगर उसको फिर से state करूं, क्योंकि इससे हमारा आधा काम हो गया, वरना वो थ्योरम बहुत बड़ा हो जाता अगर मैं उसमें वो रिजल्ट्स का वो जो आर्गुमेंट है वो यहाँ डाल देता. जो ना मैं एक दो एक्सरसाइजेस की. सो लेट x एंड y बी रियल नॉर्मल स्पेसेस and t from x to y be, मुझे लगता है कल ही करेंगे, अभी 6 मिनट में तो ये होगा नहीं. So I think we should just close it here, क्योंकि ये भी बड़ा थ्योरम है. So let's stop it here, इंशाल्लाह कल फिर से मिलेंगे. So let me